तो ठीक है, उसे केशव, कहते हैं। अपना इक्वल एलिमेंट्स प्रॉब्लम को बताना अपनी अप्रोच जो भी है। ठीक है। तो जैसे आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, एक एरे दी हुई है साइज n की, उसमें दो इंडिसेस सिलेक्ट करना है और दोनों को सेम करना है, और हमें ये तब तक करना है जब तक पूरी एरे सेम नहीं हो जाती। तो फिर हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बताना है एक एरे को इक्वल बनाने के लिए। तो जैसे एक टेस्ट केस देखते हैं इसमें। जैसे मुझे एक एरे दी हुई है 4 एलिमेंट्स की, उसे देते हैं 2231। वापस करना है क्या? एक सेकंड। हाँ, 2231 दी हुई है। तो इसमें मुझे, जैसे मैं ये वाला इंडेक्स सेलेक्ट करूंगा और फिर ये वाला इंडेक्स सेलेक्ट करूंगा, फर्स्ट और थर्ड, तो इसमें मैं इन दोनों को इक्वल बना दूंगा। और वैसे ही मैं इसको और एक वापस फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करूंगा और इन दोनों को इक्वल बना दूंगा। तो नॉर्मल अप्रोच है। अब कोड पे जाते हैं। तो फिर इसमें मुझे क्या फाइंड करना है सबसे पहले, कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कौन सा एलिमेंट आ रहा है और सबको उसके इक्वल बनाना है। तो जैसे मेरा 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो मैं n माइनस जितनी बार ये आ रहा है वो कर दूंगा। तो मैंने पहले ये लिखा कोड, उसे कहते हैं नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, एक इंटीजर इनपुट लिया। मैंने इसको मैप के जरिए सॉल्व करा है। कि मैंने मैप, देखो इसको करने की दो अप्रोचेज हो सकती हैं। एक अप्रोच हो सकती है आप पूरा सॉर्ट कर दो। अ, एक अप्रोच हो सकती है कि मैं सॉर्ट कर दूं इसको, पर सॉर्ट करने से मेरा एन लॉग एन में चला जाएगा सोल्यूशन। दूसरी अप्रोच हो सकती है मैप की। मैप में मेरा जो सोल्यूशन है वो ओ ऑफ एन में ही रहेगा, क्योंकि मैप में सर्च करने की वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ ऑफ वन, इसलिए। तो फिर मैंने एक मैप बनाया। उसमें मैंने मैप में उसे कहते हैं ऐसे इनपुट ले लिया और मैप में सारे एलिमेंट्स ऐड कर दिए। फिर मैंने एक मैक्स बनाया जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा है एलिमेंट वो सर्च करने के लिए। तो जैसे ही मैंने पहले मैप को ट्रिवर्स करा ऑटो एक्स कोलन एम पी से। उसका जो मैंने फ्रीक्वेंसी उसमें ऐसे स्टोर करा रखी है। तो सही जैसे ही मैं उसके फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट बताऊंगा, अगर वो मैक्स से ज़्यादा है तो मैक्स को सेकंड के इक्वल कर दूंगा, और फिर मैं सी आउट कर दूंगा एन माइनस मैक्स। अगला है प्रीफिक्स परम्यूटेशन, किसको करना था? मुझे करना था। हाँ ठीक है, गीतांजलि, अब प्रीफिक्स परम्यूटेशन एक्सप्लेन कर दो। हाँ ठीक है। सो इज माय स्क्रीन विजिबल? हाँ विजिबल है, ठीक है। हाय गाइस। तो आज हम ये प्रीफिक्स परम्यूटेशन डिस्कस करेंगे, कोडशेफ का कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या कहा हुआ है कि हमें एक इंटीजर n गिवन होगा एंड हमें उसकी ऐसी परम्यूटेशन बतानी है कि हम कोई भी प्रीफिक्स सम उठाएं, तो हम जितने नंबर का प्रीफिक्स सम उठा रहे हैं तो वो टोटल सम उस नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। लाइक अगर हम टेस्ट केस देखें तो टेस्ट केस में हमें गिवन है 4। तो फर्स्ट 4 इंटीजर्स का हम ऐसा प्रीफिक्स मतलब ऐसा परम्यूटेशन बताएंगे इन 4 नंबर्स का, सच दैट कि हम कोई भी प्रीफिक्स सम उठा लें। जैसे मैंने फर्स्ट 3 नंबर्स का प्रीफिक्स सम उठाया, 3 4 एंड 1, इट विल बी इक्वल टू 8 एंड 8 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। इस तरह की हमें परम्यूटेशन बतानी है। तो सिंपली हम, ये काफी इजी प्रॉब्लम है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो बस एक छोटी सी ट्रिक छुपी हुई है। इसमें हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे पहली बात तो कि नंबर ऑड है या इवन है। अगर तो नंबर ऑड हुआ तो हम सिंपली बता सकते हैं कि उसका कोई भी ऐसा प्रीफिक्स सम पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो ऑब्वियसली टोटल सम जो होगा वो इवन ही आएगा। और अगर n की वैल्यू ऑड है तो साफ साफ दिख ही रहा है कि पॉसिबल नहीं है। बट अगर सपोज n की वैल्यू इवन होती है तब हम क्या करेंगे? तब हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, i प्लस वन को पहले प्रिंट कर देंगे और i को बाद में, फॉर ऑल i टू फ्रॉम वन टू n। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? क्योंकि हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी अगर एलिमेंट आ रहा है तो उसका जो सम बने वो उससे डिविजिबल ना हो, प्रीफिक्स सम। तो हम उससे एक प्लस करके एलिमेंट उसमें डाल रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास इंश्योर हो जाएगा कि जो सम है वो डिविजिबल बाय आई नहीं होगा। और हम आई को प्लस टू करते जाएंगे, क्योंकि हम एक लूप में दो बार दो एलिमेंट्स प्रिंट कर रहे हैं, आई प्लस वन और आई। इस वजह से हम लूप को प्लस टू करेंगे। और लास्ट में हमारे पास जो परम्यूटेशन प्रिंट होगी उसमें हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि कोई भी प्रीफिक्स सम उठा लो वो आई से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप सो आपको प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। हाँ ठीक है। वैसे किसी फ्रेशर को इसमें डाउट है क्या, अगर कोई अटेंड कर रहा हो तो? प्रमोद, समझ में आ रहा है क्या उसे? नहीं, मेरे को समझ नहीं आया।
क्या नहीं समझ में आया वैसे? मतलब कैसे किया उन्होंने? तुमने प्रॉब्लम एक्चुअली स्टेटमेंट पढ़ी हमने क्या? बात एक मिनट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ी है तुमने? जी भैया। हाँ तो हाँ, तुम ही समझा दो। ठीक है। ये देखिए, सपोज आपको n इक्वल टू 6 दिया है, तो हमारे जी पास फर्स्ट 6 नंबर है 1 2 3 4 5 6। ओके, और मुझे जी पता है कि सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स का फॉर्मूला ये होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ओके, जी तो इस फॉर्मूला से ये इंश्योर होता है कि अगर n इवन हुआ तो n प्लस वन ऑड होगा, n इवन होगा तो भी सम इवन आएगा। बट सपोज n अगर ऑड है तो n प्लस वन इवन हो जाएगा, तो भी सम ने इवन ही आना है। ये आपको समझ आ गया? जी तो अब अगर हमारे पास n की वैल्यू सपोज 7 दी होती, तो अगर n की वैल्यू 7 होगी, तो मैं ये इंश्योर करना चाहती हूँ कि फर्स्ट जो 7 नंबर्स का जब मैं टोटल सम करूंगी तो वो 7 से डिविजिबल ना हो। हम्म, ओके, बट यहाँ पर मैं जब n की वैल्यू 7 पुट करूंगी तो ऑब्वियसली वो 7 से डिविजिबल होगा। एम आई ऑडिबल? जी जी हाँ समझ में आ गया। हम्म, तो इस वजह से मैं ये इंश्योर कर रही हूँ कि जो फर्स्ट n नंबर हैं बस उनका सम n से डिविजिबल ना हो। तो मैंने क्या किया, जो i प्लस वनथ एलिमेंट था उसे पहले प्रिंट करा दिया और i को बाद में प्रिंट करा दिया। तो मैं ये इंश्योर कर रही हूँ कि एक नंबर ज्यादा ऐड हो रहा है, इस वजह से वो डिविजिबल होगा ही नहीं। गीतांजलि, एक सेकंड, उसको n = 6 का आउटपुट ही दिखा दो ना, शायद उसको समझ में आ जाएगा ये। वहाँ पे गूगल डॉक पे टाइप कर दो ना। हाँ देखो, ये वाला नहीं, वहाँ पे जो तुम उल्टा कर रहे हो, 2 1 4 3 6 5 हो जाएगा ना इसका। वन तो टू सिंपली यहाँ पे आउट, हाँ ठीक है। ये देखिए, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले i प्लस वन प्रिंट करा दिया, देन i प्रिंट करा दिया, देन अगेन मैं i इक्वल टू 3 पे आ गई तो मैंने i प्लस वन यानी 4 पहले प्रिंट करा दिया, देन 3 प्रिंट करा दिया। इससे क्या इंश्योर हुआ कि जो ये एलिमेंट है, जब मैं फर्स्ट टू एलिमेंट्स ले रही हूँ तो इनका सम ऑड बन रहा है एंड इट इज नॉट डिविजिबल बाई टू। थ्री, टू से डिविजिबल नहीं है। फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स लिए और इनका सम बन रहा है मेरे पास 3 प्लस फोर 7, 7 इज नॉट डिविजिबल बाई थ्री। तो इंश्योर हो रहा है कि सम डिविजिबल नहीं है। जी आ गया। चलो ठीक है, अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये सॉल्व हो गई है। ठीक है। अगली प्रॉब्लम वो होती ना, क्या कहते हैं इसको, परम्यूटेशन प्रीफिक्स, नहीं नहीं, परम्यूटेशन सब सीक्वेंस। सचित, शेयर कर लो यार। हाँ सर, मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है, अब तुम स्टार्ट हो जाओ। Hello everyone. Today I am Sachin and I will be explaining the problem permutation subsequence. So let us go through the problem statement first, which is as follows. Shafina has an array A consisting of n positive integers, and they have provided us the definition of permutation subsequence, which is nothing but a subsequence that represents a permutation. And now what is in subsequence? They have mentioned that a subsequence of an array is obtained by deleting some elements from the array without changing the order, which basically means from anywhere in the array you can delete some elements, but the order should remain the same. And now what is a permutation? A permutation of length m is an array in which every element from 1 to m occurs exactly once. So if I say what is the permutation of length 3, it must contain 1, 2, and 3 in any order. All right. And now they have asked us to modulo the answer because it might be large. So we will take care of that also. And they have provided us an input. All right, let's see the input. So the number of test cases are 2. And the first array contains 5 elements, which are as follows. And the second array contains 6 elements, which are as follows. So now if we take the first test case, let me explain to you how does it work. So we have n is equal to 5 and the array goes as follows. For this problem, I will be solving it by using dynamic programming. So let us see how. First of all, let us find the answer for m is equal to 1, a permutation subsequence of length 1.
So for that, we know that our subsequence should be one only, right? It should contain only one. So what will be the number of subsequence? It will be, in this case, we will traverse the whole array and we will see the number of ones, which in this case is one. All right. Now, if I say that I need to find for length 2, then I know the possible options for length 2 are 1 comma 2 and 2 comma 1. Nothing else is possible. So for this question, now we know that for length 1, we have one answer. Okay. And now for length 2, using DP, we can say that I now have to combine all the 2's present with that one. All right. So in this case, the answer would be 2, because the first one can be combined with this 2 and with this 2 also. Similarly, for length 3, we can look for the answer of 2, and we can check the number of 3 present. So to show you this in code, all right, from here, I have taken the number of elements, the integer inputs, and I have created a variable named as answer, a variable previous for the previous answer. If let's say I'm calculating the answer for length 5, then previous will be storing the answer for length 4. So now, first of all, calculating the answer for length 1, we are just, increasing the array when the element is equal to 1. So now we have got the answer for 1. And now we are using simple DP for the 2 till n. First of all, we are saying the current answer is 0. And then we are traversing the whole array and we are checking that if the element is equal to I, the length, then we are saying that the answer for this is current is equal to current plus previous. So as I mentioned here also, when we come to this 2, we check the previous answer 1. There is only 1, so we increment the answer by 1. And then again, when we come to this 2, we simply again increment because we can make pair with this. So as we progress further, the current will contain the answer, and we are also modeling it. After that answer, I can increment the actual answer, which will be the sum of all from 1 to n. It's done in this step. And after that, I can update the previous with the current answer, and we can finally output the final answer. That's all. सॉल्यूशन तो बढ़िया था यार, बट आई थिंक प्रमोद को समझ में आया और प्रमोद ही चला गया। चलो ठीक है, वैसे मैंने इसको बिना डीपी के किया था एक्चुअली। जैसे इस पे देखेंगे, टेस्ट केस में जाना एक बार, या मैं ही शेयर कर दूँ? एक सेकंड। नहीं ठीक है, मैं शेयर कर दूँ। जैसे इसमें ये था ना, क्या कहते हैं, 1 2 3 2 4, ठीक है। तो बेसिकली मैंने पहले काउंट निकाल लिया, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है, ठीक है। वही बिल्कुल जैसे बिल्कुल सेम करा 1 है मैंने इंटू 2, एक्चुअली। मतलब सेम ही है, मतलब मैंने वही। थोड़ा ना ज्यादा डिटेल में लिख दिया था, मतलब क्योंकि पहले में से हो नहीं रहा था, तो बाद में हुआ, तो आई वाज लाइक गोइंग स्टेप बाय स्टेप, कोई कुछ बात नहीं, गड़बड़ ठीक ना है। हो। हाँ चलो अगले पे चलते हैं। So hi guys, this is Vinay. Today I'll be discussing C at KBF and tree. So let's understand the problem first. So Chef C at KBF has an unrooted weighted tree with n nodes, where vertices U and V are connected by an edge with weight W. The value of the simple path from X to Y is defined as the bitwise XOR of the weights of the edges it consists of. So a simple path is nothing but a path from node X to Y where no node has been visited more than once, right? So yeah, here it is also mentioned that a simple path is a path that does not have repeating vertices. And we have to find 4 vertices A, B, C, D such that A is less than B and C is less than D. And the values of the simple path from A to B must be equal to the path from C to D. So we have to make sure that the XOR of all the edges from A to B must be equal to the XOR of all the edges from C to D. And A and B should not be equal to C and D, right? It's obvious. If A is equals to C and B is equals to D, then it will always be equal, right? So
Yeah, and note that 4 vertices do not have to be distinct. So we can use one node more than once in A, B, C, and D, which means that B can be equals to C or A can be equals to D, but both cannot be equal at the same time. Yeah, and yeah, so let's just take a test case and understand it. So I have taken this test case 1 to 1, 2, 3, 2, and 2, 4, 3. So this is the graph where 2, 1, 3, 4 are nodes, and there is edge between 1 and 2 of weight 1, 2 and 3 of weight 2, 2 and 4 of weight 3. So in this graph, we can see that there is a path from 1 to 4, and the XOR of this path is 1, let me type it, 1 XOR 3, which is equals to 2. And there is a path from 2 to 3 where the XOR is 2 only, because there is only one edge. So we have gotten two pairs where the XOR is equal, right? So one pair is 1 comma 4 and the other pair is 2 comma 3. So therefore we can return 1 comma 4 and 2 comma 3. Okay, so we can do this problem in two complexities. Either we can do is n cube, or we can do this in n square. N cube solution is not accepted, so we have to do it in n square. It is very brute force solution, right? So we will consider all possible combinations and check whether both XOR are equal or not. If they are equal, then we can return them. Otherwise, we can return -1. Now, the trick here is to check this in n square, right? Because n cube solution is very naive. Anyone can do it. We have to just take XOR of all the possible paths and just check it. So the property that we have to use here is this. If A or B is equals to C, then this also implies that B is equals to A or C. Okay. So in our test case, let's say we have to, this is not a proper test case. Let's just add one more node here. Okay, so I have added another node 5 with weight 4. So let's say we take all the distances from node 2. So distance of node 2 from 1 is 1, and distance of node 2 from 5 is 1 or 4, which is equals to 1, 0, 0, and 1, which comes out to be 5, right? So now if we have to find the distance of node 1 from 5, what we can do is we can take XOR of the distance of node 2 from 1 and node 2 from 5. So the distance of node 1 from 5 would be 1 XOR 4, which is equals to 4, right? So this is the basic intuition behind the solution. So let's get into the algorithm. Yeah. So this is the algorithm. Step 1 is to do DFS and store the values of distances of all the nodes from the node 0. Okay. Once we have got all the distances of all the nodes from node 0, I have taken node 0, you can take any node, right? So, and step 2 is we have to group the indexes according to the distance from the node 0. So all the indexes which have, let's say, a distance k from node 0 will be grouped together. Okay. And final step is to check if there is more than one pair with the current distance. If there is, then we have got a pair which satisfies all the conditions and we can return the answer. So let's just look at the code. This is basic DFS code. Let's start from here. Yeah. First, we have taken input, right? And we have created an adjacency list.
and here is our DFS. We have created a vector distance which stores the distance of any node from node 0, and we have created another array visited which which is for DFS. If you have done DFS, you know that there is an array visited which we use to mark if an element is visited or not. And here we call a function DFS, and we start our DFS from 0th node. uh, Here is the DFS function, where first we will mark the current node visited. Then for every adjacent element, like for every child of this node, we will check if that child is visited. If it is not, then we will mark its distance as distance of current node XOR uh, the distance of current node XOR the weight of the uh, edge between current node and this node and current node, right? And we will call the DFS function again for this node. So when this DFX function completes, in this distance array, we will get the XOR distance of all the nodes from node 0. Okay. Uh, then here we have created a map to store all the possible combinations of XOR distances. Here two for loops are required because we have to consider every possible combination of pairs. And in step 2, we have to group the indexes distance wise, right? So first we will get the current distance by using the property which I have told you just earlier. So current distance will be distance of I or distance of j, and then we can push it into the map. Here I and j denotes the indexes of the current pair, and here we will check there is one more if there is more than one element which have distance as same, like which have same distances, then we will see out the possible pairs and we will simply return. So yeah, this was the solution of this problem.